दो स्टडीज है जो पब्लिश्ड है, एक तो आई थिंक न्यू इंग्लैंड जर्नल में, जेरोंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में पब्लिश्ड है, विच इज अ डिसेंट जर्नल, और दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में। योगा के जो इफेक्ट्स है वो डॉक्यूमेंटेड है और जनरलाइजेबल है, और देखा गया है कि योगा से इफेक्ट डिफरेंस होता है, और ये नॉर्मल पॉपुलेशन में it can make a difference. But can yoga increase health related quality of life and mental well-being? I work with the geriatric age group, I work with dementia, so both of these studies are done in the geriatric age group, over the age of 60, but both of these studies, and there's plenty of evidence in younger people. So just because I'm saying that this is in geriatric age group doesn't mean this is not generalizable to a younger population. So that's the caveat. अपने लाइफ से खुश है, आप कितने खुश है, राइट? कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में क्वालिटी है, और मेंटल वेलबींग के बारे में बात करेंगे। हमको पता है कि हेल्थ रिलेटेड, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि आपका हेल्थ ठीक है, और आप मेंटल वेलबींग अच्छा है, तो वो हेल्थी एजिंग में माना जाता है, राइट? लाइक वी नो अ लॉट ऑफ पीपल जो आसन करते हैं, तांडव करते हैं, कौशकी करते हैं, साधना करते हैं, गुड डाइट फॉलो करते हैं, हेल्थी है, तो उनकी लॉन्ग लाइफ है, वो कभी कंप्लेन नहीं करते, ओ मेरी लाइफ ठीक नहीं है, मेरा लाइफ खत्म हो गया, राइट? लाइक हेल्थी एजिंग वो माना जाता है, राइट? और योगा इज अ माइंड बॉडी फिजिकल एक्टिविटी, हम जानते हैं, तो मैं योगा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। स्टडीज है, एंड आई एम हैप्पी टू पुल देम अप, यू कैन ऑल्सो पुल देम अप इन गूगल स्कॉलर। ये अच्छे स्टडीज है जो एस्टेब्लिश किया कि योगा से इंक्रीज स्ट्रेंथ होता है, एंड व्हेन दे टॉक अबाउट योगा दे जस्ट टॉक अबाउट, इस स्टडी में सिर्फ योगासन के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिटेशन के बारे में नहीं, योगा ब्रीदिंग के बारे में नहीं, प्राणायाम के बारे में नहीं। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है, बैलेंस एंड मोबिलिटी एंड मूड। सो ये काफी स्टडीज है जो ये प्रूव करता है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस इंक्रीज होता है, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स जिनके डायबिटीज है, जिनके न्यूरोपैथी है, बैलेंस अच्छा नहीं है, तो योगासनास इंक्रीज बैलेंस एंड मोबिलिटी, जो चल नहीं पाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो दर्द है, योगा की वजह से वो चल, देयर वाज एन इंक्रीज इन मोबिलिटी, ज्यादा चल पाए, और मूड, डिप्रेशन को तो इंक्रीज हेल्प करता ही है। तो ये ऑलरेडी है, ये सिस्टमैटिक रिव्यू जो है, ये दिस लुक्स एट क्या आपकी हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्प करता है योगा, एंड डज इट improve your well-being in people aged above a certain age, because that's what I see, right? So it's a systematic review of randomized control trials in people over 60 with yoga based postures, yogasan. तो आउटकम जो थे, जो मेजर किए गए, वो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटल वेलबींग था। तो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज when you feel like your physical health, your mental health, your emotional wealth, and your social wealth. Physical we know, mental we know, emotional is happiness, sadness. Are you able to express yourself? Do you feel like people understand you? Social is your ability to get along with your wife, your husband, your children, your parents, your buas, and your extended family, right? All of this impacts your health related quality of life. अगर आपको लग रहा है कि all of these areas में ठीक ठाक आप कर रहे हैं, तो आपकी quality of life अच्छी है। तो what is mental well-being? Mental well-being also we know through previous studies, mental well-being, a feeling of being well mentally, right? We know that people who have high scores on mental well-being feel like they're aging better. They have healthy aging. So it's usually associated with a higher level of calm, right? Like they're not in their bed, they're working out, they're going, they're gardening, they're probably reading, they're probably teaching, they're doing a lot more in their old age, and they're mobile, they're able to walk, and they have better health. So what is this? एक तो subjective experience of happiness. अगर आप उनसे पूछेंगे आप खुश है, तो वो बोलेंगे I mean लगभग खुश हो, right? Like I mean none of us are completely happy, but I'm satisfied, I'm content with my life. And positive psychological functioning, they have good relationship with others, and self-realization and self-actualization. And we'll come back and talk about this. Self-actualization थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में बेस्ड है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स द सेम लाइक इन इंडिया वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन व्हिच इज वेरी स्पिरिचुअल, राइट? अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, तो फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन, हाउ डू यू सी इट? एंड हियर people see it as finding a sense of purpose and being able to act on it, right? Deciding कि आप का इस दुनिया में आना किस चीज के लिए था,
और उस पे काम करना, राइट? आई मीन रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, वो मैस्लो के थियरी में इट इज ऑन द लोअर रंग, राइट? आई मीन ऑफ कोर्स इफ यू डोंट हैव फूड, इफ यू डोंट हैव योर बेसिक नीड्स मेट, you're not going to be happy. But एक होता है कि basic needs meeting के लिए आप काम कर रहे हैं, you know, you're working a full-time job, you're taking care of everyone. When all of that is met, let's say आपके बैंक में enough balance है, तो फिर आप क्या करेंगे, right? One day you can sleep, and 2 days you can sleep and rest and have fun. उसके बाद you want to do something, and that's where your self-actualization start. वो, and we can talk about this after the study. That is higher on the Maslow's theory. So, mental well-being is people who feel like they're involved in self-realization and self-actualization, and these were the two outcome measures that were looked at, right? Does yoga improve your health-related quality of life? Does yoga improve your mental well-being? So we know that from previous studies that yoga improves strength, it improves balance, it includes flexibility and mobility. Right? So this is a review of 12 papers, randomized control trial, जिसमें योगासन थे and health related quality of life देखा गया and mental well-being के measures थे, right? So participants between 60 to 75 थे, community से थे, ऐसे नहीं थे hospital setting से थे, they were from all over, and some of them had multiple medical problems. Some people, एक study में people with breast cancer थे, colon cancer था, and then people had osteoarthritis, जो दर्दें होती है, back pain and all of that, Parkinson's disease, and you know, people with multiple comorbidities. So it was not like they were like young and healthy and they were doing yogasanas. These were people just like us. So obviously they were not doing perfect yogasana. Like यहाँ पे कोई मयूरासन नहीं कर रहा था, right? They were just doing normal, however much they could do. And so control group था, intervention group था. Intervention group में participants 45 to 90 minutes of yogasan करते थे per session. 1 to 3 classes per week. Every other day yogasan करते थे. And ये 8 to 24 weeks चला. So 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन योगा, 6 महीने तक, एंड कुछ में होम योगा प्रोग्राम भी था. कंट्रोल ग्रुप में या तो कुछ नहीं थे या तो फिर रैंडम ऐसे एक्सरसाइज करते थे, एंड देन दे यूज्ड टू हैव सम काउंसलिंग. that was the design of the study, and only physical yoga and meditation and breathing was included. Yoga style se Hatha Yoga, Yogasan, Vinyasa, Thai yoga, Iyengar and Vini yoga. Or ye outcome measures the health related quality of life was measured in SF36 physical composite summary, jo bahut badi summary hai, in which they talk about that. Do you feel like you're physically healthy, socially healthy, mentally healthy, depression scores, right? And then mental well-being is WHO quality of life instrument, and I can talk about it, but I think most of you will get bored. So basically they just said कि आप खुश है अपने life से, अगर आप खुश है तो ये ABCDE questions को answer कीजिए और हम decide करेंगे कि आप है कि नहीं, right? So then let me do this. So this is just a list of कि कितना बड़ा study था, right? एक study था जिसमें Iyengar हठ योग कर रहे थे, तो 128 लोग थे, both male and female. और एक में I think they were doing Vini yoga, तो 57 लोग थे. Iyengar yoga में 88 people थे, Vini yoga में again 118 people थे. बहुत ही well tolerated था. इतने सारे लोगों में I think totally आप मिलाएंगे तो 720 लोग थे. सिर्फ 2 लोग नी पेन की वजह से ड्रॉप आउट हुए, एक एब्डोमिनल पेन, एक ग्रॉइन पेन, हर्निया, व्हाटएवर, मसल सोरनेस एंड हिप पेन, राइट? इतने like 720 लोगों में, like maybe like this was all इतने ही लोग ड्रॉप आउट हुए, तो बहुत ही वेल टॉलरेटेड था. तो आई मीन ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज है. हम अपने पेशेंट्स को मतलब हम अपने मतलब जो भी आते हैं आसन सीखने के लिए, हम बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से बात कर लेना. दिस इज वेरी गुड, वी शुड डू इट. नहीं तो अमेरिका में तो आप सू करेंगे आपको. बट ये आप इस स्टडी को देख के ये भी समझ सकते हैं कि योगा बहुत वेल टॉलरेटेड है. अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा सा कीजिए अपने आप को, डोंट पुश योरसेल्फ टू मच, स्पेशली विद बैक पेन, बट ट्राई एज मच एज यू कैन, एंड आई कैन थिंक यू कैन यूज दिस स्टडी टू सब्सटैंशिएट, राइट? लाइक इस स्टडी से पता चलता है कि ये बहुत वेल टॉलरेटेड था. तो ये this is math, so I will try to make it soon, and if anyone's interested I can talk to them in detail later. This was, does yoga have an effect on health related quality of life? And मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी. ये जो बीच वाला ये है 0 जो होता है उसका मतलब मेरे को योगा से कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? ये जो 0.5, 1 and 2 स्टैंडर्ड डिविएशन टू द राइट है, अगर आपके स्कोर्स यहाँ पे आते हैं उसका मतलब मुझे योगा से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा.
और अगर यहाँ पे -5 -0.5 एंड -1 आता है, यहाँ पे आता है, तो उसका मतलब योगा से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? या फिर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्टडी के जो ये कॉम्पोजिट एग्रीगेट्स है, पूल्ड एस्टिमेट्स है, वो सारे या तो यहाँ पे है या तो फिर पॉजिटिव साइड पे है। तो सो देयर वाज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मीडियम इफेक्ट from yoga on health related quality of life. Standard mean deviation was 0.51, and the confidence and the power was pretty good, right? So yoga did moderately improve just asan se logon ki health related quality of life moderately improve hua and statistically significant effect tha. And then mental well-being also the same thing, right? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे मुझे mentally I'm feeling well just आसन से। मैं डिप्रेस थी, मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं आसन कर रही हूँ 3 हफ्ते में 3 बार for 45 to 90 minutes, and मैं ये 6 महीने कर रही हूँ, तो उससे you can see there is a positive correlation, right? People felt like कि मुझे फर्क पड़ा इससे, and this standard mean deviation was 0.38, was like slightly smaller. So there was a small but statistically significant effect on mental well-being, right? So yoga say quality of life, health related quality of life improve hota hai, mental well-being improve hota hai sirf asan se, and this is not even looking at meditation. So I think it improves balance, mobility, symptoms of depression. It's well tolerated. It's long term. It's a sustainable lifestyle change. Koi side effects nahi hote. Health professionals can confidently recommend it to improve quality of life, and this happens right in the US. We do this more and more, especially meditation. And Dr. Stephen Landu, जो पशुपति है, वो prison में भी ये योगा सिखाते हैं. Of course, optimal dose क्या है, कौन से आसन किस चीज के लिए करने चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इस पे रिसर्च होना चाहिए. And I think Baba's way of saying that is also like talk to your acharya, right? Talk to your acharya about this, or like we should spend more time doing research on this. I think that is it. I don't have any more slides to share, so I'm going to stop sharing.